Question number 4. In a right angle triangle with sides A and B and the hypotenuse C, the altitude drawn on hypotenuse is x. Prove that AB equals CX. Let it is triangle ABC and it is the altitude drawn from vertex A to the hypotenuse and the length of AD is x. The length of hypotenuse is C and AB is A and it is B. Let in triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, AB equal A, AC equal B, AD equal X and BC equal C. Now in triangle ACD and triangle ABC, means this triangle ACD and whole triangle ACB, we have angle D is equal to angle A, both are 90 degree, it is perpendicular, it is altitude means perpendicular to BC, and BAC is 90 degree. Angle BAC is equal to CDA 90 degree and angle C is common, means angle BAC is equal to angle DCA is common, it is each 90 degree and it is common. Now triangle ABC is similar to triangle, एंगल ए के प्लेस पे क्या आएगा, ए 90 है, ये किसके बराबर है, डी के, देन फर्स्ट डी, बी के प्लेस पे क्या रहेगा, बी किसी के इक्वल नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है, सी के इक्वल है, मीन्स लास्ट में सी, देन दिस ट्रायंगल इज ए डी सी, डी एंड सी आर first and third position, then A is in the middle. Now ratio are equal, means since triangle are similar, then their corresponding sides are proportional. AB by DA is equal BC by AC is equal AC by DC. अगर हम इसे एंगल के अकॉर्डिंग अरेंज ना करें तो हम ये जो रेशियो निकालते हैं ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे एंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मतलब जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसी पोजीशन पे लिखा जाएगा. नाउ ए बी इज, वी हैव ए बी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी. पुट द वैल्यू, ए बी इज ए, डी ए इज एक्स, BC is C and AC is B. Cross multiply, we have AB equals CX and it is proved. हम इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is obtained by 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. अगर हम बेस ए बी ले रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ए सी, मीन्स ए बी इंटू ए सी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 ए क्रॉस बी. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC is 1/2 base into corresponding height. If base is BC, then its corresponding height is AD. Means base is BC, then its corresponding height is AD. Then it is 1/2 BC into AD. Value of BC is C and AD is X, and this area is equal to area of triangle ABC 1/2 A into B. Means it is equal to 1/2 A into B. 1/2 cancel out, and we have AB equals CX. It is second method, but we have to use this method because in this method we apply the theorem of similarities.